Hello children, I am Mrs. Masih and today we are going to do revision of lesson 7 chapter Air. Children, we have finished half of the revision from this chapter. Now today we will do the left over part. So in this chapter we have done revise about the air. What are the qualities in air? We have learned about that air occupies space, then air has weight, then air is needed for breathing, then air is necessary for burning. Air is necessary for burning, children, as you can see in this picture. And if you have remembered that we have done in the practical also, when I was taking a chapter, that we took two candles and we light both the candles. Then we covered one of the candle with the glass. हम लोग ने दो कैंडल लिया था और दोनों को हम लोग ने लाइट जला दिया था, फिर एक कैंडल को हम लोग ने ग्लास से बंद कर दिया था. तो व्हाट वी ऑब्जर्व आफ्टर समटाइम्स द कैंडल which was covered with the glass stopped burning, and the candle which was without the glass or what was open, that was still burning, that was continuing burning. मीन्स आप दोनों कैंडल में से आपने फर्क क्या देखा? जो कैंडल हम लोगों ने ग्लास से कवर कर दी थी वो थोड़ी देर के बाद जलना बंद हो गई थी, और जो कैंडल बिना ग्लास के थी वो तब भी जल रही थी. What this shows that air is necessary for burning. Means ये ग्लास के अंदर का जो एयर था, जब तक उसमें एयर था, because air is present everywhere, so the air which was inside the glass, that in that time the candle was burning. When the air was air finished from in the glass, then this candle stopped burning. मतलब जब हवा थी तब तक वो जल रहा था, जब हवा खत्म हो गई तो वो जलना बंद हो गया. This shows that air is necessary for burning. हवा, अगर आप कहीं पे आग लगा रहे हैं, कहीं पे कुछ जला रहे हैं और वहां पे हवा नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हवा होती है तो वो आसानी से और जल्दी जल जाता है. This shows that air is needed for burning. Now, what are the uses of air? Air has many uses. These are also uses of air, but these are also included of uses of air. It sails the boat. With the help of air only boat sails. It flies a kite. Air dries wet clothes. Air helps in burning things. Air helps to cool your body. It helps to fly an aeroplane. Air is needed for sailing boat. If there is no air, it will be difficult to fly the kite easily. And you know that air dries our wet clothes. जब हमारे कपड़े गीले होते तो हम उसको बाहर डालते ताकि वो सूख सके, और अगर हवा नहीं होती है तो पतंग भी अच्छे से आसानी से नहीं उड़ पाती है. They all need air. And you know that for burning also air is needed. अभी हमने पढ़ा कि जलने के लिए भी हवा की जरूरत होती है. Air helps to keep our body cool. जब हमें when we feel hot, then we sit under the fan because we get air from the fan. जब हमें गर्मी लगती तो हम हवा की फैन के नीचे बैठते हैं, फैन के पास बैठते हैं ताकि हमें हवा लगे और हम कूल फील करें, हमें गर्मी ना लगे.
एयर ऑल्सो हेल्प्स टू फ्लाई एन एरोप्लेन. हवा, एरोप्लेन को भी उड़ने के लिए हवा की आवश्यकता होती है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ एयर. Tires of vehicles, football and swimming tubes of all are filled with the air. Air is needed to fill the all type of tires, football and swimming tube. हवा जो होती है, बिना टायर जो होते हैं वो बिना हवा के उनका कोई यूज नहीं होता है. फुटबॉल भी आप खेलते होंगे, बॉल से खेलते होंगे, अगर उसमें हवा नहीं रहेगी तो यू कैन नॉट प्ले विद द फुटबॉल, उसको फुटबॉल का कोई यूज ही नहीं है. देन स्विमिंग ट्यूब ऑल्सो, अगर उसमें हवा नहीं है देन दैट इज जस्ट लाइक अ रबर एंड यू कैन नॉट यूज दैट एंड दैट उसका कोई यूज ही नहीं है. तो टायर्स में, फुटबॉल में और स्विमिंग ट्यूब में भी हवा को भरा जाता है. Then we won't be able to blow off the candles on our birthday cake if there would have been no air. आपने नोटिस किया होगा when you celebrate your birthday or you go on any party and someone is blowing off the candle, he or she needs to blow air with the mouth. हम लोग कैंडल को बुझाने के लिए, ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुंह से हवा को फूंकते हैं. सो विदाउट ब्लोइंग एयर, हम मुंह से क्या निकालते हैं, हवा निकालते. अगर हम हवा नहीं निकालेंगे, कैन यू इमेजिन दैट कैंडल विल, नो, इट कांट बी. तो अगर हम कैंडल को फूंकने के लिए हवा नहीं निकालेंगे मुंह से, या फैन ऑन नहीं करेंगे, या हाथ से हवा नहीं देंगे, तो वो कभी भी बुझ नहीं सकता है. तो कैंडल को बुझाने के लिए भी हमें हवा की जरूरत होती है. नाउ चिल्ड्रन, आई हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चंस फॉर योर रिवीजन, फॉर योर प्रैक्टिस. लर्न ऑल द क्वेश्चंस. अगेन आई एम टेलिंग यू, रीड each and everything from your book, all the exercises and whatever given in the book, read nicely so that you can do very well in your exam. Question number 1 is, it is a quality of air. Just now I have explained you about the qualities, and in previous video also we have discussed about the quality. Now what is this quality of air? It says what? B, it helps in burning. C, it has weight, or all of these. Children, always remember, always read all the options which are given or which will be get in your exam. Don't be confused, don't be in hurry or take only one answer. Please remember, as I have given here, this is also quality of air, this is also quality of air. Air has weight, this is also quality of air. Means all these three sentences are correct. So I have given one more option, that all of these, means all these three options. It means you have to take on D, that is all of these. Don't take only on A or B or C. If you will take only A or B or C, and this type question will come, then your answer will be wrong. So always read all the options very carefully, think, and then choose the one option. Second is, it can be filled with air. What can be filled with air? Kite. किसमें हम हवा भर सकते हैं? Cake, utensils, or tire of vehicles. Just now we have done the revision that we can fill the air in the tires of all type of vehicles. Okay. Question number 3 is, they need air to live. Who need air? किसको हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए? Option A, plants. B, animals. C, human beings. And the D is all of these. Again the same type question is here. Plants also need air to live. Animals also need air to live. Human beings also need air to live. But you should not take
on plants or animals or human beings. You have to put tick on D, that is all of these. It is not necessary that every time you put tick on all of these or both of these, but in every question you read the question carefully, then all the options carefully, then only you choose one correct option. Then fourth is, we cannot blow off the burning candle without it. अभी हमने बताया था किस चीज के बगैर हम बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल को बुझा नहीं सकते हैं. दैट इज एयर और वाटर और बोथ मीन्स एयर एंड वाटर or none of it. So here is the correct answer, air. We need air to blow off the burning candles. Okay. This is the revision of lesson 7 part 2. Do practice of all questions. Read the book and prepare yourself for your exam.